Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well, right? So, welcome to School Days. On this channel, you will get science chapter videos for the middle school classes, like for the 8th to 10th grade, for ICSE and CBSE board. So, we are starting this series. I hope it will be helpful for you. So, for getting the benefit, you can just subscribe the channel and you can share with your other fellows so they can also take the benefit of the same. So today we are going to cover about the transportation in plant, which is the first chapter for class 8 ICSE, right? So we'll cover everything which we have been seen in this chapter. This is a biology chapter. In the upcoming video, students, you will get all the videos for all the upcoming chapter in a sequence. So we cover biology, science, all the science part like the biology, chemistry, and the physics. Okay, so let's start our journey for this chapter. So sit with paper and pen so you can take a note of everything because I have been made a note for you as well. So you can make note and you can just use it. So let's go. So basically we will cover all the topic from the chapter. We will learn about the transportation, that what is this transportation. हमने already पढ़ चुका है वैसे if we in the grade 7 about the circulatory system if you remember. So उसमें भी हमने human circulation के बारे में पढ़ा था, right? और कुछ हमें idea लगा था about the plants as well. सो ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है यहाँ पे लाइक जिनको हम वेस्कुलर बंडल और वेस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं, xylem and the phloem, we will learn about them and what all are the different type of the cell in them, how the root system help in the absorption of water. Also we'll cover the active and passive transportation. Along with that, we'll learn about the like what all are the factors, concentration gradient, osmosis, diffusion, how the this transportation of water and mineral takes place. Then we'll learn about the transpiration. We are having an idea about it because we have been learned in the water cycle, the role of the plant to contribute in the water, right? तो हमें थोड़ा आइडिया है, थोड़ा और हम पढ़ेंगे एंड ये रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन के साथ साथ वी विल लर्न व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द ट्रांसपिरेशन and the nutrient role of the nutrient, like our body require the nutrients, right? Like the carbohydrate, fats, vitamin, mineral, right? So similarly in the plants they also require a nutrient, and some are the macronutrients, some are the major nutrients. So we'll cover all those. So let's start and let's move and let's learn about the transportation. So what do we mean by the transportation? You can see a picture, है ना? So transportation हमें पता है, transport simply, है ना? क्या बोल सकते हैं हम लोग? Transport. So like in the human body, the blood plays an important role because it is going to carry all the nutrient oxygen from the respective organ to the entire body parts, right? It is working as a transporter. It is transporting with the help of the blood vessels also, which has been spreaded in all over the body. तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यही है, जैसे कि लाइक इफ़ यू ऑर्डर समथिंग लाइक अ पिज़्ज़ा समथिंग, तो द डिलीवरी बॉय ब्रिंग इट फ्रॉम दी सोर्स टू योर हाउस, राइट? आपके सोर्स से क्या है, ये आपका सोर्स है. सो यहाँ से क्या कर रहा है, वो आपको डिलीवर कर रहा है कहाँ पे, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है. सो सोर्स टू दी लाइक वी कैन से रिक्वायर्ड एरिया. है ना? सो दिस इज द ओनली थिंग वी नो एज द ट्रांसपोर्टेशन. तो वही उसके लिए हमारी बॉडी में हमने पढ़ा था कि वी आर हैविंग द आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. सिमिलरली इन द प्लांट्स दे आर हैविंग अ टिश्यू सिस्टम, दे आर हैविंग अ टिश्यू सिस्टम. सो आगे हम बात करेंगे. Before that, you people can write the definition. So, transportation can be defined as the movement of any substance from one place to another, right? From the source to the required area. So, what is need to be transport in the plant, right? Because we are learning about the plant. So, you can see this picture. So, in this picture, we know the leaves are going to make a food for the plant, right? So they are going to make the food for the plant. So leaves are known as the kitchen of the plant. These are known as the kitchen of the plant, of the plant.
right? So they require something for the process of photosynthesis, right? They are going to make the food, they are known as the autotroph. So by the process of photosynthesis, they are going to make the food, right? Because of that, they are known as the producer. But they require something for that, right? Which is need to be transport. Up like sunlight is required, we know. The carbon dioxide is present in the nature, so that is available by the help of the that stomatal opening. They are going to absorb it, right? Along with that, हमने पढ़ा like they require a chlorophyll which is present in the leaf. And one more thing is required, the water. हम वैसे यहाँ water ही नहीं लिखेंगे because the water is having the dissolved mineral in it, right? So dissolved mineral in the water. अब ये सारी like the sunlight they will absorb with the help of the stomata, the carbon dioxide also. Chlorophyll is already present in the leaf, giving the green color pigment, green color pigment, right? What is lacking, that is water, which need to be transported by the root system. Root are going to absorb and they will just deliver it to the and transport it to the up in upward direction to the entire plants to the leaves to carry this process of photosynthesis, right? So what all they require to transport, we learned that they require the water, they require water and the nutrient to for the metabolic activities should be transported in the body of the plant and the animals, we already learned, right? So the waste material also they are going to excrete with the help of the opening, that we will learn about, that is the excretion part. For that also they require a transportation, right, through respective organ. So this is the meaning of the transportation. I hope you all had taken a note and we can move forward. So we just heard about two words, that the conducting tissues are required here, the xylem and the phloem. So the phloem will just transport what? The photosynthesis product, and the xylem water and mineral from the root to the entire plant. So let's learn about it on the next slide in bit detail. Yeah, so as I told you here, like the xylem is going to transport the water and mineral, right? So there will be transportation of water and mineral. Water and mineral. So students, this transportation, as I told you, water is being absorbed by the root of the plant. So they are going to absorb it and then they will transport it into the upward direction. Because of that, it is a unidirectional flow. Unidirectional flow. In which direction बच्चों? In the upward direction. है ना, एक डायरेक्शन में. तो क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है जाइलम? हमारा वाटर एंड मिनरल. सो बेसिकली ये जो हमारे कंडक्टिव सिस्टम है इनको हम वेस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं या फिर वेस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं. So these are what? These are the group of the cells which are performing a same task. Group of the cells, and cells हमने पढ़ा है fundamental unit of the these any organism, that is the fundamental unit, right? So we can write what is vascular tissues. These are made up of the group of the cells with the spatial features, with the spatial features, spatial features, right? So different cells, they are going to unite to perform the same work, right? They are going to do same work.
So these all things we can write like a vascular bundles. Like our body, we do have the veins and these arteries to transport. Similarly, this is a tissue system. We are having a different cells with a spatial features, or but they are responsible for working for this same purpose. Okay, तो xylem हमने cover कर लिया. We will talk about the phloem. So as you can see, it transport the food. What does it transport? The food. So this food we have been just learned. The leaves. The leaves are responsible for the production of the food. But it has been required by entire plant na to do their metabolic activities. अब रूट ने तो वाटर एब्जॉर्ब किया तो ऊपर पूरे प्लांट को दे दिया, लेकिन लीव्स को क्या करना पड़ेगा? इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो, इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो. In both the direction, it need to transport the food which has been prepared by the photosynthesis. So it will be a bidirectional flow. It will be a bidirectional flow. Right? So I hope it is clear. No doubt is there. We can move forward. है ना? चलो, let's move forward. Now we will talk about the what all are the cells which are present in them, which are helping for the conduction of the water and the mineral, and what are the type of the cells present in the phloem to transport the food. So this is a diagram. You can look how it looks like. So here you can see like xylem vessels, xylem phloem. So they are connected to each other. They are connected to each other to perform the function. That function, what function? That work of the transportation of the food, water and mineral. So xylem, first of all, we will talk about the xylem. You can take a note. Xylem is like it is a complex conducting tissue. You can write it is a complex conducting tissue. अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि कॉम्प्लेक्स और सिंपल क्या. सो कॉम्प्लेक्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल से बने हैं, बट दे ऑल विल परफॉर्म द सेम वर्क. राइट, डिफरेंट डिफरेंट सेल से बने हैं बट दे ऑल विल परफॉर्म द सेम वर्क. राइट, सिंपल में क्या होता है? सेम टाइप ऑफ सेल, दे विल परफॉर्म द सेम वर्क. कूल. सो दीज आर प्रेजेंट इन इंटायर द जाइलम ऑफ फ्लोएम जो है ये पूरे हमारे प्लांट में प्रेजेंट होते हैं. और प्लांट में क्या है? वेन्स प्रेजेंट है. वेन्स, थ्रू वेन्स दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ठीक है. सो अब हमने यहाँ पे पहले जाइलम के देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास होते हैं. सो यू कैन सी लाइक दीज आर दी कॉम्प्लेक्स कंडक्टिव टिश्यू एंड दीज आर ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ द डेड टिश्यूज. ठीक है, डेड सेल्स के बने हैं, डेड टिश्यूज के बने हैं, एक्सेप्ट दी जाइलम पैरेन्काइमा. है ना. उससे पहले मैं यहाँ इनलिस्ट कर देती हूँ चारों का नाम. 1 2 3 4. तो हमने पढ़ा है अबाउट जाइलम वेसल, हमने पढ़ा है अबाउट दी ट्राइकेट्स, हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में लाइक जाइलम फाइबर, और हमारा लास्ट विच इज लिविंग जाइलम पैरेन्काइमा. ठीक है. सो यू कैन सी दीज आर लॉन्ग elongated ट्यूब्स विच आर बीन कनेक्टेड टू ईच अदर. तो अगर हम बात करें सबसे पहले जाइलम वेसल्स की, तो जाइलम वेसल्स जो है हमारी, दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल. ये क्या कर रही हैं? कंडक्ट कर रही हैं. यू कैन राइट कंडक्ट कर रही हैं क्या? वाटर और मिनरल. यू कैन सी इन अ अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि कैसा फ्लो है? यूनी डायरेक्शनल. सो कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल. कौन कर रही है? हमारी जाइलम वेसल मेड अप ऑफ द डेड सेल्स. ट्राइकेट्स इनको सपोर्ट दे रही हैं. यू कैन सी ये रही हमारी जाइलम वेसल, और हमारी ट्राइकेट्स इनको क्या कर रही हैं? दे आर गिविंग सपोर्ट. राइट, सो दे आर प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट. okay, you can write they are providing the mechanical support with the tapering ends. वो tapering ends क्या होता है? आप लोगों ने देखा ना, ऐसे 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 कट्स जो होते हैं,
लाइक दिस इज द टेपरिंग एंड्स, थोड़ा नुकीला है ना, ताकि इजिली सरफेस एरिया कम हो तो मच प्रेशर से कंडक्शन ऑफ द वाटर हो पाए। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें जाइलम फाइबर की, तो जाइलम फाइबर प्रोवाइड लाइक इट विल बी प्रोवाइडिंग दी सपोर्ट। अलॉन्ग विद दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ दी दैट सेम डेड सेल्स, स्क्लेरेनकाइमा जो हमने पढ़ा है ना, स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स के बने हैं, तो ये भी सपोर्ट दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं सपोर्ट। अब ये हमारे लिविंग सेल थे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिविंग सेल्स है ना। बट इनका काम क्या है, दे स्टोर दी फूड, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही कर रहे हैं, दे आर स्टोरिंग दी फूड। So they are connected to each other and they are just building on one to one another and they are helping in the conduction of the water and the mineral. हमने ये पढ़ा, ठीक है। अब हम बात करेंगे about the phloem. I hope this part is done. You people had a note of it as well. अब phloem इससे अपोजिट है, ये भी कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू है, वेन से या इट इज बिन स्प्रेडिंग, लेकिन ये लिविंग सेल्स का बना है, इट इज मेड अप ऑफ द लिविंग सेल्स, ठीक है। सो लिविंग सेल्स का बना है जिसमें कौन से पार्ट है, लाइक फ्लोएम वेसल आप देख सकते हो 4, ठीक है। सो हमारे पास है सीव ट्यूब्स, छन्नी, छन्नी चाहिए ना, सारी चीज़ों को थोड़ा ना पास कर देंगे। सो सीव ट्यूब है हमारे पास सीव सेल्स जो इन्हें हेल्प करेंगे, है ना। वी आर ऑल्सो हैविंग द फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड वी डू ऑल्सो हैव द कंपेनियन सेल जो सपोर्ट करेंगे, सेल्स विच विल हेल्प, ठीक है। तो ये जो सीव ट्यूब है मैंने यहाँ लिख दिया है वैसे। सो सीव ट्यूब जो है ये बना है हमारा मिलके हमारे सीव स्लेस और सीव प्लेट को मिला के, तो यहीं पे आप लिख लो सीव प्लेट्स को मिला के। सो यू कैन सी ये जो ट्यूब्स दिख रही हैं आपको, है ना, इससे आप देख रहे हो एरोज इन अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दे विल जस्ट ट्रांसपोर्ट दी फूड मटेरियल जो कि किसने बनाया, लीव्स ने, उसको ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अब ये जो कंपेनियन सेल है दे आर जस्ट सपोर्टिंग दैम इन द सेम, राइट। सो दे आर सपोर्टिंग, इनका नाम ही है क्या, इनका नाम है कंपेनियन, गिविंग कंपनी, राइट। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें फ्लोएम पैरेन्काइम, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये करते हैं कुछ स्पेशल वर्क। So these are responsible for and these are specialized for the storage, specialized for food storage, है ना। तो हमने क्या पढ़ा, अब अगर हम डिफरेंस की बात करें, कंक्लूड करें, सो वी जस्ट लर्न कि लाइक हियर वी विल बी हैविंग अ टू टाइप ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम, द जाइलम एंड द फ्लोएम। सो जाइलम में हमने देखा वाटर एंड मिनरल इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज रूट्स आर गोइंग टू एब्जॉर्ब एंड दीज ऑल आर द पार्ट्स। एंड यहाँ हमने पढ़ा अबाउट द phloem where we can see the bidirectional flow of the food to entire parts of the plant. So it is a two-way flow, right? Water along, water being it will be helpful for the transporting. Okay, so I think we can move forward. We are clear about this part, right? Let's move forward. And now we will talk about our role of the roots. The role of the roots. So we have, if we see the root, अगर आपने कभी देखी होगी ध्यान से तो उखाड़ के मत देखने लग जाना, लाइक अभी लाइक लेट मी टेल यू देयर इज अ मेन रूट। हमने टैप रूट एंड फाइब्रस रूट पढ़ा था। टैप रूट जनरली वी गेट इनटू द लॉन्ग स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, टॉल ट्रीज, राइट, एंड द फाइब्रस जनरली इन द ग्रासेस। सो हमारा ये स्लैंड्रिकल लॉन्ग रूट जो जाता है मेन रूट, इसको हम क्या बोलते हैं, मेन रूट, मेन रूट। अब इसी में से हमने देखा इसकी सहेलियां निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, इनको हम सेकेंडरी या फिर लेटरल रूट कहते हैं। इनको हम मेन रूट को प्राइमरी रूट भी बोलते हैं। सो हम इनको लिख देते हैं लेटरल रूट,
सबका काम वही है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। अब इसके साथ साथ और छोटे छोटे नैरो लाइक अ कैपिलरीज, क्योंकि ये लेटरल रूट थोड़ी भारी हैं, मोटी हैं, तो ये क्या नहीं कर पा रही, सरफेस एरिया को बढ़ा नहीं पा रही हैं। सरफेस एरिया स्प्रेड कौन कर रहा है, हमारा रूट हेयर, right? So they are spreading them in the water and absorbing, spreading them into the land and absorbing what, the water and the dissolved mineral. अब इन्होंने कर लिए, and with the help of the xylem they will just transport in upward direction, ये हमने पढ़ लिया अभी तक। अब रोल क्या है, किसके लिए हेल्पफुल है, हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर मिनरल, ये हमें पता है मेन रोल है। along with that root hair increases the surface area, as I told you they can just spread out, है ना, छोटे छोटे fibrous like, so they are going to increase the rate, so that root hair increase surface area for, यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, for the absorption and active and passive transport are the two methods। अब हम एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, लाइक किस में एनर्जी रिक्वायरमेंट है, किस में रूट हेयर के द्वारा, लाइक हम देखेंगे कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दिस इज अ रोल ऑफ द रूट सिस्टम, ठीक है। शूट सिस्टम देन अपना वर्क करेगा। Now here you can take a note of mechanism of the absorption of the water. So there are two mechanism of the water in absorption जो हमने चैप्टर में पढ़ा, active transport and the passive transport. So active transport की बात करें तो you can write the definition, along with that I am writing some points. It happens from the low concentration of the cell to the high concentration, ठीक है, high concentration। Along with that, for doing so the cellular energy is required, ATP, cellular energy is required, is required in the active transport. So this kind of the water absorption calls for the expenditure of the metabolic strength with the aid of using the cells to carry out the metabolic processes, जो करनी होती है, cells will do the metabolic processes to synthesis the energy for the living organism such as like respiration के लिए भी। So for that also we need ना वो जो nutrient हमने absorb किए हैं with the digestion, then that with the help of the oxygen we are going to synthesize the energy from them. So this is active absorption in the plant happens in way, so particularly the osmotic or non-osmotic absorption of water happens. Now what is this osmosis? So this happens through the semi-permeable membrane, so where the concentration of the water molecule is going to be balanced, है ना। On the next slide we will learn about it. Before that let's learn about the passive transport. सो इसका वाइसा वर्सा कर देंगे। अब यहाँ पे हमने देखा था लो से हाई में हो रहा था, अब यहाँ से हाई कॉन्सेंट्रेशन से जो ट्रांसपोर्ट होगा टू दी लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, है ना। और ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का हो रहा है रूट सिस्टम में, वाटर एंड मिनरल का। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में होगा सेल को, बट यहाँ पे हमारे कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, तो वी विल से नो सेलुलर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, नो सेलुलर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ओके, सो ये जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इट इज़ ऑफ टू टाइप। पहला हम डिफ्यूजन की बात करेंगे, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ये लो इंटरमिक्सिंग, है ना, डिफ्यूजन। एंड दूसरा है हमारा ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन में क्या होता है बच्चों, हियर दिस यूजेस द सेल मेम्ब्रेन, ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को यूज करता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेम मेम्ब्रेन होती है ना। सो इसको यूज करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की, सो ऑस्मोसिस में तो हमने पहले ही बात कर ली, ये क्या करेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को यूज करेगा, सेमी परमेबल
मेम्ब्रेन को यूज करेगा फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, okay, to balance the concentration. Okay, I hope we are done and you all have been taking a note of this. So this type of the water absorption does not require the use of the metabolic energy which is required in active. Absorption is caused by metabolic activities such as the sweating. ये हमारे कुछ example है for the animals. Passive absorption is a type in which the water absorption occurs through the transpiration pull. तो मैंने tapering ants जो बताया था, स्टोमेटा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, है ना, वो ट्रांसपिरेशन जो होगा. सो ट्रांसपिरेशन से कैसे होता है, लाइक जो पानी क्या हो गया, इवोपरेट हो गया, सो देर विल बी सक्शन पुल by in these vessels, so the water will be just moving in the upward direction. वो रूट का और स्टोमेटा का क्या है, कनेक्शन है टू क्रिएट अ प्रेशर इनसाइड दीज वेस्कुलर टेब्यूल्स. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब ये कुछ फैक्टर्स हैं, यू कैन टेक अ नोट ऑफ दीज. So like you can see on some condition I have been just divided them, right? So you can see concentration gradient is there, you can see needs semi permeable membrane and the molecule transported. Okay, so let's talk about them as well. So here you can see concentration gradient. So in the osmosis, as I told you, high to low. Diffusion high to low. Again active transport में क्या होगा, low to high. इस तरीके का table you can make, so it will be helpful for your exam to learn about them. Okay, easily. So this is how you can also clear in your exam. It will be really good to learn, right? Make this table. So needs semi-permeable membrane. Yes, in the case of osmosis it is required. In the case of the diffusion, the cell membrane is required. But then in the case of this active transport, it is not required. So these two are we have to learn. The case of the passive transport, right? Molecule transported, water obviously, water and mineral, and here mineral ion. Okay, I hope you have been taken a note. चलो अब वी विल टॉक अबाउट द रोल ऑफ द वाटर. किस किस के लिए पानी ज़रूरी है, लाइक पानी तो बहुत ज़रूरी है हमें पता है, लेकिन प्लांट के लिए कैसे ज़रूरी है. फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, है ना, हमने दोनों में पढ़ा. अगर पानी नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, सो हाउ द प्लांट विल बी एबल टू डू दी फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, सो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो वो भी नहीं कर पाएगा फूड प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, तो हाउ इट विल सर्वाइव, how it will survive. So for survival it require a transportation of the water and then it is going to prepare its food with the help of the photosynthesis process. And cooling हम बात करेंगे ट्रांसपिरेशन, है ना, जो कि हम अगले स्लाइड पे पढ़ने वाले हैं. सो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, सो लेट्स लर्न अबाउट द ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन की बात करें तो ट्रांसपिरेशन सबसे पहले हमें पता है ऑन द एपिडर्मल वी आर हैविंग दी स्मॉल ओपनिंग्स जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा. We call them the stomata. So these are the small opening on the undersides of the leaves are called stomata. आपने अपनी स्किन पे भी देखे ना, जहाँ से हमें स्वेटिंग होती है ना, तो आपने कभी एब्जॉर्ब किया है जब स्वेटिंग होती है तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, ठंडा फील होता है. ऐसे ही जो अर्थन पॉट्स होते हैं वो जिसमें हम वाटर स्टोर करते हैं, उनकी सरफेस पे भी स्मॉल स्मॉल दीज पोर्स होते हैं जहाँ से क्या होता है, ये वाटर क्या होता है, बाहर निकलता है और वो इवोपरेट हो जाता है और क्या करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है. राइट, सो बेसिकली दिस ट्रांसपिरेशन इज प्रोवाइडिंग द कूलिंग टू द प्लांट. जब हम प्लांट्स के नीचे खड़े होते हैं तो हमें ठंडा ठंडा फील होता है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन ओनली. राइट, सो इसके साथ साथ ये क्या करता है, सक्शन पुल भी क्रिएट करता है. सक्शन पुल ताकि पानी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली एनर्जी रिक्वायर्ड है नीचे से ऊपर पानी को भेजने के लिए, है ना. तो ये पाइप प्ले करेंगे इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन उनमें प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा जो कि हमारा ट्रांसपिरेशन कर रहा है. तो ये क्या है, हमारी ओपनिंग्स. सो जहाँ से क्या हो रहा है, ये अपना एक्स्ट्रा वाटर एक्सक्रीट कर रहे हैं, दे आर एक्सक्रीटिंग एक्स्ट्रा वाटर. राइट, सो एक्सक्रीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द लीव्स, तो गैशियस एक्सचेंज में भी हेल्प कर रहा है. सो इट इज हेल्पिंग इन दी स्टोमेटास आल्सो हेल्पिंग इन अ गैशियस एक्सचेंज. Right, also it is playing an important role in the water cycle by contributing the water
वाटर साइकिल। तो इतने सारे फायदे हो गए हमारे ट्रांसपिरेशन के। और जब ये पानी आके इसने अपने सरफेस पे छोड़ दिया, अब बाय द एटमॉस्फेरिक हीट इट इज गोइंग टू इवापोरेट, इट इज गोइंग टू इवापोरेट विच इज अ नेचुरल प्रोसेस। इवापोरेट हो जाएगा और क्या प्रोवाइड कर जाएगा? कूलिंग इफेक्ट। क्या प्रोवाइड कर जाएगा? कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो पानी भी कूलिंग इफेक्ट कैसे प्रोवाइड कर रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपिरेशन। सो लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट आल्सो रिक्वायर an excretory system to discharge excess water from their body. So this process of elimination of water loss, excess water from the plant body is known as the transpiration. So it is generally the evaporation of the water from the surface of the leaf. ठीक है, सो दिस इज क्लियर, आई होप वी कैन मूव फॉरवर्ड, दिस इज वेरी मच क्लियर, है ना? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट कर रहे हैं हमारे ट्रांसपिरेशन को? तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन रेट भी क्या होगा? ज़्यादा। सो टेम्परेचर विल बी मोर, this rate of the transpiration will be more. You can write along with that ह्यूमिडिटी, कंटेंट ऑफ द ह्यूमिडिटी। अगर ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स हमारी हवा में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं, ह्यूमिडिटी रेट ज़्यादा है, तो इवापोरेशन सॉरी सो ट्रांसपिरेशन रेट क्या होगा? कम होगा। उसके साथ विंड स्पीड, विंड स्पीड एंड विंड क्वालिटी। अगर विंड हमारी कैसी है? ड्राई है, सो ट्रांसपिरेशन रेट हाई होगा, लेकिन उसने मॉइस्चर कंटेन किया हुआ है तो लो होगा। और हमारा थर्ड हो गया सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द लीफ, है ना? जितनी बड़ी होगी उतने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे, जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन रेट होगा, उतना ज़्यादा सक्शन पुल होगा, राइट? सो आई होप यू ऑल हैव note of this. Let's move to our last topic. So role of the nutrient. जैसे हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, राइट, है ना? न्यूट्रिएंट चाहिए, न्यूट्रिशन हमने पढ़ा है। सो प्लांट्स को भी चाहिए भैया, दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दे रिक्वायर अ प्लांट्स, दे रिक्वायर अ न्यूट्रिएंट, सॉरी। सो किस किस के लिए, पर्पस के लिए चाहिए? दे नीड द दिस न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए, राइट, रिप्रोड्यूस करने के लिए, इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए दे रिक्वायर अ न्यूट्रिएंट। जैसे हमने पढ़ा नाइट्रोजन, सल्फर, वी हैव बीन लर्न अबाउट द आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, राइट? सो जैसे टू वी कैन राइट दे नीड देम टू जर्मिनेट, ग्रो, फाइट ऑफ डिजीज एंड पेस्ट and to reproduce, like animals need a nutrient in a some they require in a large quantity, some they require in a low quantity। तो ज़्यादा क्वांटिटी में जो चाहिए वो है हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट, दोज आर नोन एज दी मैक्रोन्यूट्रिएंट। लेकिन जो कम क्वांटिटी में चाहिए दे आर नोन एज दी माइक्रोन्यूट्रिएंट, they are known as the micronutrient. So I have been enlisted some of them for you, so let's move forward. So macronutrient and the micronutrient, you can take a note of the definition. The one which is required for the essential in a more amount for the plant growth and good overall state of the plant, so these are the primary nutrient, right? Like a nitrogen, है ना? हमने पढ़ा fertilizers, manures, तो manure are the organic salts, है ना? जो हमारा ऑर्गेनिक वो है कचरा, उसको हम इकट्ठा करके मैन्योर बना सकते हैं इन द फार्मलैंड। अब हम बात करें फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र आर रिच इन द न्यूट्रिएंट सच एज दी NPK जो हमने पढ़ा है, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और हमारा पोटेशियम, राइट? सो नाइट्रोजन किस लिए ज़रूरी है? फॉर इट इज़ रिक्वायर्ड इन अ लार्ज अमाउंट, एज आई टोल्ड यू दे आर रिक्वायर्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी, है ना? क्योंकि इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डिवीजन ऑफ द सेल्स, सेल डिवीजन नहीं होगा, हाउ द प्लांट इज गोइंग टू ग्रो, राइट? हार्मोनल चेंजेस, विटामिन प्रोवाइड करता है, प्रोटीन प्रोवाइड करता है। सो नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, ऐसे ही फॉस्फोरस ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, सेल मेम्ब्रेन को बनाएगा, उसके साथ साथ ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन सबको क्या करता है? इम्पॉर्टेंटली प्रोवाइड करता है फॉर द रिएक्शन टू द प्लांट। पोटेशियम, पोटेशियम की बात करें तो फॉर द ग्रोइंग पार्ट्स, राइट? येलोइंग ऑफ द लीव के लिए भी इट इज़ इंपॉर्टेंट। येलोइंग ऑफ द लीव हो जाएंगे तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। अब बात करें हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए, इन अ वेरी लेस क्वांटिटी सच एज दी आयरन, जिंक,
बोरॉन, सिलिकॉन, है ना, और भी हैं हमारे पास, कोबाल्ट, दे दीज आर। आयरन की बात करें तो आयरन हमारे पास दिख रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, किसके लिए, एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम्स के लिए, ताकि ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर पाएँ। मैंगनीज़ की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, येलोइंग ऑफ द लीफ, स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर। एंड जिंक एंड कॉपर की बात करें तो ये हमारे किसके लिए ज़रूरी है, इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ द सर्टेन एंजाइम्स। सो कुछ चाहिए ज़्यादा क्वांटिटी में, कुछ चाहिए कम क्वांटिटी में, जैसे कुछ विटामिन और मिनरल हमारी बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए, कुछ कम ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। सो देयर विल बी अ प्रपोर्शन अकॉर्डिंग टू दैट दे रिक्वायर। सो आई होप यू ऑल हैड अ नोट ऑफ इट, है ना। तो हमने पढ़ लिया सारे टॉपिक्स के बारे में। तो हमने पढ़ लिया कि क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट हो रहा है इन द केस ऑफ द मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। सो पॉलीसैकेराइड जो हम हमारे लिए स्टोर्ड फॉर्म में होता है, मतलब कि स्टार्च, है ना, जो स्टार्च है, लेट मी राइट इट हियर। और हम बात करें डाइसैकेराइड्स, तो वो क्या है, सुक्रोज और सॉलेबल इफिशिएंट सुक्रोज, है ना। तो ये वाला स्टोर्ड फॉर्म में हमें मिल रहा है। और ग्लूकोज क्या है, हमारा मोनोसैकेराइड्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस इज रियली हेल्पफुल फॉर यू. If it is helpful for you, please share it with your friends so they can also take a benefit of it. Thank you for being at the last, and please stay tuned on the channel for more upcoming videos in a such a way. So soon I'll upload some next chapter videos, so you can just continue your studies as your new session is going to be start soon, है ना. So you can start your studies with us with school days, and you can stay tuned for upcoming chapters. So we will follow the series in the continuous manner, so you can utilize it for your learning. So bye bye everyone, please like the video, share with your friend, and also if it is helpful, so please put the just press the like button. And if you have any query, you can just comment me in the comment section. I'll just reply you over there. And on what topic you want a videos of the chapter and the notes, you can let me know. I'll just make the video on the same. So thank you everyone.